the memories of Mohammad Rafiq and the other great singers of ours. Meantime, getting back to cricket. Once again, wishing all my Hindu brothers happy good Dipadwa and a very happy new year to you. Sudesh getting set to bowl, right arm over the wicket. Over pitched, driven in the air, fielder coming underneath it, and a very simple catch there of the very first ball. Viraj, a very important bat for Akasmat in the previous match, was the man of the match, but unfortunately couldn't get going, and holds on a very simple catch to the mid of region. Home ground, because they have played a lot of cricket on this ground. Most of the batsmen are very familiar with the ground conditions, the depth of the field, the boundaries, like Shailesh, Zahir. We have a lot of talented cricketers in this team. Here is Sudesh getting set to Navnath. Overpitched, but driven just for a single. Meantime, the fielder comes in, picks 1 run and 1 more to the total. So 1 for 1. Akasmat batting first. Sudesh misses his bowling run up. Once again, getting set from the Costa Road end. Overpitched, driven into the gap. Ball running towards the boundary. Once it drives and cuts off, it's 4 runs. Anything into the gap? Because it's a very lightning outfield. The ball just races to the boundary. A lot of classic cover drive. Nagappa, who has some nice nudging and touching touches with the bat. This time another overpitch delivery. Fielder getting underneath it, ball in the air, and nicely judged there by the fielder on the boundary. Bablu, well judged catch. And in the bargain, another important wicket down for Akasmat in the form of Nagappa. I was just talking about some of the guys' talent that they have, Akasmat. They dip down. The batting is very deep, so they can bat really deep in. And here's one of them walking out, Zahir, a very good all-rounder who has played a lot of cricket here on this ground at the non-strikers end. Meanwhile, Sudesh getting set. Overpitched and rightly treated. What a shot. Straight past the bowler, 6 runs. Batsman's paradise. The pitch is full of runs. If you connect, you should connect it well. And if it is well connected with sheer timing, this is what it happens. Into the stands. Here is Sudesh once again.
Another pitch delivery in the block hole, dug out nicely by the batsman, and crossover for a quick single. End of the first power play over. Akasmat have scored 12 runs and lost 2 important wickets. Meanwhile, once again, reminding all the viewers, you're at this first all Goa Panchayat and municipality level tennis hardball cricket tournament brought to you by the Aquem Scw Welfare Association under the leadership of the President, Mr. Damodar Shirodkar, and the rest of the members who have worked overnight to really put in a lot of hard work to bring up this tournament at this level and at this cross the grounds. So heads off to all the team. They work really hard. 12 for the loss of 2 wickets. Second over, Bablu, the team captain, leading from the front. Amazing captain now with the ball, who's taken the responsibility, and he'll be bowling from the Costa Road end. Hot and humid climate that we are in. Now to take strike, Bablu doing some slight field changes. Here goes Bablu, right arm over the wicket. Oh, lifting shot delivery played in the air. Fielder getting underneath, a misjudgment, but both the fielders. And the catch was dropped in the bug in 2 runs. Slightly misunderstanding from both the fielders. You go, I go, and in the end it was just a stop and the ball dropped in no man's land. So no not gets alive. A very lucky one for Akasmat because they need him at the crease. Bablu once again, left arm round the wicket. Another lifted one, this time over and down. Oh, another catch drop there. He got into the act, but at the last minute couldn't hold on to it. So another life. The mid-off region. So 2 drop catches of 2 consecutive deliveries. Bablu trying to fox the batsman, succeeding, but the fielders couldn't hold it. Here is once again Bablu, over pitch this time, and nicely driven, fielder getting underneath it. And meantime the throw comes in, another single been taken. So 1 more to the total. Score moves on to 17. Second over of power play on, which means after this over the field restrictions will be lifted. So there are a lot of gaps on the offside, on the leg side. Bablu, left arm round the wicket. Shot lifting, nicely played by Zahir. Over the top. 4 runs. Bablu coming for some harsh treatment from the batsman. Zahir once again on strike. Over pitched on the off stamp. Zahir couldn't connect it well. Taken by the keeper and a dot ball. Akasmat put into bat in search of quick runs. Lost 2 quick wickets. Nagappa and Viraj. And now Zahir and now not at the crease. Bablu once again.
A change of balls. Bablu getting set. Left arm over the wicket. Nicely driven. And a misfield there, which results in a single. Batsman wanted to go for the second, but decided against it because the throw came in. So end of the second over and end of power play. 22. Akasmat have scored 22 for the loss of 2 quick and important wickets. Over to DJ. His last and second over for his team. And he'll be bowling to the all-rounder, Zahir. Slight field adjustments being done by the fielding side as the power play has been lifted. Here goes Sudesh. Oh, left deliveries yacked him. Zahir wanted to play it in the leg side. Ricochets of the fine edge and goes on to the short third man region. A single been taken. Score moves on to 23. No, not on strike. Yacked, but flayed edge of the bat, which ball travels to fine leg in the no man's land, and one more to the total. With that single, score moves on to 24. Over pitch this time once again, and deservedly got the treatment. Into the stands. Sudesh was struck beautifully by Navdeep. Some sheer timing. Full toss and gets the treatment. Straight into the stands. The mid-wicket fans. So 2 consecutive sixes. Sudesh going for some runs now. Score was under 36. Akasmat batting first. 36 for the loss of 2 quick wickets. At the crease, Navnath and Zahir. Another slow delivery, but way wide outside the off stump. And a wide ball called. So 1 more to the total. Score was under 37. Sudesh from the Costa Road end. Right arm over the wicket. Over pitched, nicely driven there, and equally well fielded. That could have been a costly boundary, but 3 runs were saved with some timely attempt from the fielder. So brilliant batting, fielding, and bowling as well. All-round performance on this ground. Over pitch, nicely driven there by Zahir for another quick single.
Zahir looks to be in slight pain. Hope for the team, because he's a very important player of the team. He looks in pain. Slight niggle, could be his hamstring. Yeah. Retired. Yeah. Walks out. Zahir walks out as is for some treatment. Retired hurt. And definitely would take some quick treatment to be back on the field. Meantime, the new man who comes in is Junaid. Junaid, another very promising, talented cricketer. Oh, another nice lifting. Fox, the batsman all round. Dubesh, who bowled the last over in the previous match, comes in to bowl. Right arm round the wicket. Short ball and nicely pulled handsomely into the crowd for a 6. Dubesh, after being struck for a huge 6. Another over pitch one and another beautiful timed shot. 2 consecutive 6s. This is timing. Dubesh had bowled a very tight over in the earlier game, goes for runs. Here is Dubesh once again. Another short one, but this time the batsman misses completely. Skomos is 51 with his 2 towering 6s. So a dot ball, nice comeback from the bowler, Dubesh. Dubesh getting set to bowl his next delivery to Navnath. Junaid this time bitten outside the off stump once again, nicely flighted. Was in the air, trying to drive it on the up, misses. Taken by the keeper back to the bowler. Dubesh once again. Slow one. Fox the batsman, fielder getting underneath it and takes the catch. Rahul who takes that catch. Both the captains, please report for the toss. Karpaban, Ponda and Gumteshwar Warriors. 51 for the loss of 2 wickets. Going strong.
Akasmat, and at the crease at the fall of Junaid's fall, it's Shailesh, another upcoming talented cricketer who has played a lot of cricket here on this ground. So he knows the depth, he knows all the corners of this ground. He has bowled, he has batted. For so many years he's been playing and performing at this very ground. Over pitch this time. Now not trying to drive him, misses. And a dot ball. Videsh back to the bowling mark. And a low full toss, but that results in a catch. He finds the fielder. It was nicely collected, but didn't get the elevation. Shot, and this is a dolly for Shailesh. He waited and waited for that delivery. The short bad ball from the bowler, which gave him ample of time to smash him into the crowd. So another huge six by Shailesh. New man at the crease, Mahmood. Another over pitch delivery. Fielder getting underneath it. Brilliant effort there on the fence. Effort. With this another full toss, but this time Shailesh finds the fielder straight to Rahul. And Shailesh loses. Man in. Batsman name, please. Dadapir. Videsh, which is next well within pulled. It was quite for a long time in the air, but just dropped short of the fielder. Meantime, Dadaji gets a single, opens his account, and will take strike. So end of the 5th over. Akasmat have managed to score 62 runs.
Santosh getting to his bowling mark with the next and the final over of Akasmat's innings. Nicely cut there, but equally well fielded into the 30-yard circle, but not before the batsman crossover for a single. So one more to the total. Score moves on to 63. Akasmat batting first, and which takes Mohammad Mahmood on strike. Over pitch, Mahmood goes for a drive, manages in only holding in to Rahul for a simple catch. So once again from the Costa Road end, right arm round the wicket. Shot lifting outside the off stump, way outside the off stump, rightly called a wide. So one more to the addition of the total, and the score moves on to 64. Akasmat batting first. Over pitch this time. Batsman trying to hit him hard but misses. Wrapped on the pad and in the buggen, crossover for a single. One more to the total. Score moves on to 65. Dada Peer and Imam at the crease. Iman. Left-handed Iman, who can clear the field in the leg side. Santosh, the bowler, making some field adjustments before he bowls the next delivery. Imam on strike. Over pitch, and what a shot. What a shot. 6 runs. Lovely connection. Two balls to come. Here's Santosh once again. Another little full toss there, and Imam collects 2 runs. Meantime, the ball comes in, a slight misfield from the fielder, fumble. 73 is the score. A very competitive score in this format with 6 overs per side. Slow ball and wide called, little away wide down the leg side, and in this format anything down the leg side is a wide. Score moves on to 74. Akasmat batting first. Last ball of the innings for Akasmat coming up. Santosh from the Costa Road end. A slow one. Imam strikes it. Rahul getting underneath it. And a 4th catch taken by Rahul. I've been told by my co-commentator Ashok that this is the 4th catch taken by Rahul. So nice fielding, overall batting and bowling there. The innings of Akasmat comes to an end.
75 for amazing. DJ. By Akasmat, which means amazing cricketers. Kunkolim will need 75 runs. India allotted 6 overs and 2 overs of power play coming up. I request both the openers to kindly take the field. Thank you. And over for further comments to take you to this innings of amazing cricketers, I call upon my co-commentator, Ashok Ji. सर 75 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए अमेजिंग क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी अखिल और अखिल के साथ राहुल, ये जोड़ी मैदान पर ओपनिंग जोड़ी के रूप में, और बॉलिंग बार पर पहला ओवर लेकर वासु गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छा टोटल है अगर 6 ओवर की बात की जाए, लेकिन देखना होगा पिछले मैच में एक धुआंधार बल्लेबाजी की थी अखिल ने, और वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए पहली गेंद का वासु अपने बॉलिंग बार पर। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। डीजे पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत होते हुए मैदान पर एक लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, और अखिल ने बिल्कुल जो पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और इसी मैच में चौके के साथ शुरुआत करते हुए अपने इनिंग को। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर्स राहुल और वासु गेंदबाजी पर पहला ओवर लेकर एक शानदार बल्लेबाजी की। नवनाथ ने 3 छक्के लगाए, 27 रन बने और उन्हीं का साथ दिया जुनैद ने 2 छक्के लगाकर 12 रनों का
और एक बार फुल टॉस गेंद एक और बाउंड्री पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद 4 रन के लिए। समुद्र संगीत हमारे साथ, 2 बड़े शॉट बल्लेबाजी में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा, बल्ले को हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल बना और जो कि स्कोर में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 9 रन बिना किसी नुकसान से। टारगेट मैच को जीतने के लिए 75 रनों का अमेजिंग क्रिकेट टीम मुकाबला करते हुए अकस्मात इस बार पेरिस से थोड़ा सा लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 रन पर पहुंचता हुआ। बढ़िया शॉट, हाफ वाली पर लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बल्लेबाजी में अखिल की ओवर पिच, इस बार लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई। Well, the third man and the third umpire is in check. We're still checking. The decision is pending. And that's been done. It's a 6. बिल्कुल 6 रन का इशारा अंपायर का। वासु गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले का ओवर, एक लंबा रन अप 22 कदमों का, सामने अखिल उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी दोनों टीमों के बीच में। आगे निकले डाउन द ग्राउंड बड़े शॉट के लिए, शायद कवर पर खेलना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद जरूर थी, लेकिन जो अंदाज था उनसे ऊपर उठी थोड़ी सी गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 75 रन 6 ओवर में टारगेट मैच को जीतने के लिए, और एक बहुत ही आक्रामक शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के 20 रन बिना किसी नुकसान से। बढ़िया शॉट ऑफ वाली पर लेकर लॉन्ग अप बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 24 विदाउट लॉस। फील्डिंग में कमाल की सर सावियो सर, 4 कैच पकड़े राउत जो कि सावियो ने शानदार फील्डिंग की। Yeah, that was some very good catches been taken by Rahul. And in cricket, we all know that catches win matches. बिल्कुल, And if you can take those catches, you can win the match. बिल्कुल सर। इस बार लेग स्टंप से बाहर कहीं ना कहीं लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। टारगेट 75 का है, पहले ओवर में लगभग 25 रन बन चुके हैं। आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है, 10 ओवर के साथ रन रेट के साथ 50 रन जो जरूरी है, लेकिन आपको गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी।
इस बार ऑन साइड पर पाइन लेग पर डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। सिंगल का इशारा अंपायर का शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर और उन्हीं के साथ स्क्वायर लेग पर अंपायरिंग करते हुए विशाल। इस बार फिर से लाइन पर बटके लेग स्टंप से बाहर शैलेश गेंदबाजी करते हुए वाइट बॉल का इशारा और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अमेजिंग क्रिकेट टीम के। अगला मैच होगा गुमटेश्वर और खड़पा बांध। दोनों टीम जल्द से जल्द संपर्क करें। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद हवा में मिड विकेट फील्डर से दूर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। Advantage of the power play because this is the last over of the power play, so they are trying to extract as many runs. बिल्कुल सर क्योंकि थोड़ी सी बिल्कुल बाउंड्री जो कि नजदीक है। अच्छा विकेट है और मिले हेलीकॉप्टर शॉट खेत स्कोर के अलावा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल बना स्कोर के खाते में। और ऐसे विकेट पर गेंदबाजों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। Yes, you're right. You have to be very, very tidy and disciplined. The ball has to be in the right place. If not, you'll be in the stands. बिल्कुल सावियो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो This is my home ground. I have played a lot of cricket and football on this ground in my previous years. वेरी गुड सर। And बिल्कुल this is how it is. Yeah. फुल टॉस गेंद लेकिन अपने पॉलोत्रो में बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग शैलेश की। रन को बचाया निश्चित रूप से। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का और टारगेट मैच को जीतने के लिए 75 रनों का 22 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके 1 छक्के के साथ राहुल जो कि अखिल और राहुल नॉन स्ट्राइकर इन पर 6 पर। फुल टॉस गेंद इस बार फ्लिक किया खूबसूरती के साथ मिस फील्डिंग। बैकअप जब तक होता कव कॉर्नर पर एक सिंगल पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 33 रन। डीजे एक परिवर्तन ईमान गेंदबाजी के मोर्चे पर। स्कोर हो चुका है 33। Ashokji, in the contest of the game so far, I think so Shailesh has done a very good job. He has put the brakes slightly onto the batsman. He didn't give Rahul much elevation to play his strokes. बिल्कुल सर सामने राहुल सिंगल डबल और अखिल जो है शुरू से बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए मैदान Yeah, पर। they're very well for their big hits and especially in the power play. So the field restrictions are lifted as the power play of 2 overs is done. It's Imam now. नया ओवर जो कि और ईमान अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने अखिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर राहुल। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33 बिना किसी नुकसान से। टारगेट 75 का। ओ खराब गेंद फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बड़ा शॉट गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर।
फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर अखिल के बल्ले से बेहतरीन शॉट, 6 रन और मिले स्कोर के खाते में। ओह, शॉर्ट आर्म पुल का बैकफुट पर एक करारा शॉट, मिड विकेट पर गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, अखिल वापस, पहला धक्का, 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रिलीज है। धन्यवाद। पहला विकेट वापस 39 पर, टारगेट 75 रनों का और नए बल्लेबाज सिद्धू मैदान पर राहुल का साथ देने के लिए। राउंड विकेट, अल्टी पल्टी, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, बड़ा शॉट, ताकत भरा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। Captain of Karpaband. Last and final call. Captain of Karpaband, please report. Thank you. ओ, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले से ठोस नहीं लगी, बाहरी किनारा लगा, शरीर पे टकराई, रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे देखा फील्डर मौजूद है, सही सोच, अपने बढ़ते कदमों को रोका बल्लेबाज ने, राहुल ने। ईमान गेंदबाजी करते हुए खुद का पहला, टीम का तीसरा ओवर, 75 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए, और इस बार फिर से सफल, इस बार लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। डीजे डीजे स्कोर हो चुका है 57, टोटल स्कोर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के साथ स्कोर हो चुका है 57 टोटल स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवर बाकी, 18 गेंदे और 18 रन मैच को जीतने के लिए। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सिद्धू सामना करते हुए, शैलेश सिंगल के लिए निकले, जो कि डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई, 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। 17 गेंदों का खेल, 17 रन मैच को जीतने के लिए। न्यू बैटर मैदान पर सिद्धू गेंदबाजी में, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर शैलेश गेंदबाजी करते हुए। स्कोर हो चुका है 58, 58 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस बार आड़े बल्ले से खेला, लोअर फुल टॉस गेंद, मिड विकेट पर शॉट, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक सिंगल जुड़ गया स्कोर के खाते में। 59 रन, 59। कैप्टन ऑफ खड़पावान क्रिकेट टीम, कैप्टन आइए प्लीज, लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, खड़पावान कैप्टन। Another final call. Captain of Harpaban, Ponda, please report immediately. चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का।
और 1 रन मिल गया और जो कि स्कोर के खाते में धीरे धीरे जो कि कदम बढ़ाती हुई निश्चित रूप से छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। इस बार थोड़ी सी तेज आ गई। पिछले गेंद स्लो और 1 गेंद थी, इस बार ये तेज गेंद थी। गेंद जाके शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। और शैलेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग मारते। अब तक 3 छक्के 1 चौका बल्लेबाजी में, राहुल के बल्लेबाजी में। फिर से स्लो और 1। साव लगातार मैं कहूंगा ये अच्छी कोशिश है गेंदबाज की। Very good comeback. Very good comeback. And when a batsman is in full flow, Shailesh doing a very good job for the team. बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी बीच अगली गेंद और इस बार बहुत जल्दी पिक किया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गगनचुंबी छक्का 6 रन के लिए डीजे। अपने बॉलिंग मार्ग पर शैलेश अगली गेंद लेकर तेज गेंद उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग अप पर गेंद फील्डर के बिल्कुल दूर, सीमारेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। और एक बड़ा शॉट और इन 6 रन के साथ से खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 72 72 रन, 3 रन मैच से दूर। सिर्फ 3 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी राहुल की। उससे पहले 29 रन बनाए अखिल ने। अखिल के बाद राहुल की बड़ी बल्लेबाजी। बढ़िया शॉट। इस बार देखना होगा सिंगल बनेगा क्या, दूसरा बनेगा रन नहीं, बिल्कुल एक रन और जुड़ गया। स्कोर 1 रन के साथ से 73 पर 73 रनों पर। आने वाला मैच खड़पाबांध और गुमटेश्वर इन 2 टीमों के बीच में होगा। रिवर्स का प्रयास सफल नहीं रहे आज। बिल्कुल कमाल की राहुल ने 2 लाजवाब रिवर्स के शॉट लगाए। एक डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दादा पीर गेंदबाजी करते हुए। बड़ा शॉट, देखने का मौका बनेगा कैच का, लॉन्ग अप पर फील्डर, लेकिन नहीं, गेंद थोड़ी सी पेड़ की पत्तियों के लगती हुई और गेंद सीमारेखा से बाहर। तो इसी के साथ मुकाबला ये समाप्त होता हुआ मैच को जीतती हुई मैदान पर, जो कि एक आसान सी जीत। अमेजिंग क्रिकेट टीम 100 के साथ जुड़ जाएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए और दूसरे मुकाबले के साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में प्रशांत शिरोडकर के साथ। लेकिन उससे पहले सर 100 के साथ जुड़ जाते मैन ऑफ द मैच इस मैच का। Thank you, Ashok, and rightly said. The man of the match. It could be none other than the smashing, buckling guy who has scored a real short cameo and made really short cut off the bowlers of Akasmat. The man of the match is